लिटिल रन ऑफ कच्छ के विशाल सफेद रेगिस्तान में अग्रिया नमक मजदूरों के साथ होने वाला मौसमी पलायन बच्चों की शिक्षा के लिए लंबे समय तक बड़ी बाधा रहा। इस चुनौती से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने मोबाइल स्कूलों की शुरुआत की, जो मजदूर परिवारों के साथ चलते हैं और दुरुस्त इलाकों में भी पढ़ाई को जारी रखते हैं। रणशाला नामक इन कक्षाओं से जयेश और रिंकू जैसे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जिनकी पढ़ाई पहले बार बार बाधित होती थी। अब वे अपने निवास स्थल के पास ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नमक के खेतों से किताबों तक की ये यात्रा बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है और उन्हें एक सुरक्षित बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है। ઘણી બધી શાળાઓ રણમાં ચાલે છે અને એ અંતર્ગત અમે બાળકોને રમાડવાનું કામ કરીએ છીએ। અહીંયા રમતગમતના સાધનો પણ અમારે અવેલેબલ છે। સાથે સાથે અમે એલસીડી ઉપર પણ એમને અભ્યાસ કરાવીએ છીએ। ખાસ કરીને એમનો બાળકોનો વિકાસ થાય અને ભણી ગણીને રણમાં રહેતા અગરિયાના બાળકો પણ આગળ વધે એ હેતુથી ગુજરાત સરકાર કામ કરી રહી છે। અહીં કણ મને ભણવાની ખૂબ જ મજા આવે છે ને અહીંયા જેવું ગામમાં ભણીએ એવું અહીંયા જ ભણીએ છીએ। અમને રોજન મધ્યાહન ભોજન પણ મળે છે, રોજન ચીકી પણ મળે છે, નાસ્તો પણ રોજન મળે છે।